Hello bachcho, let's read the question. So the question says, read the passage given below. Research from the Publishers Association has shown that films based on books take 44% more at box office revenue in the UK and 53% more worldwide than original screenplays. The report explored what impact a book has when adapted for film and TV. The report reads, published material is the basis of 52% of top UK films in the last 10 years and accounts for even higher share of revenue from these leading performers at 61% of UK box office gross and 65% of worldwide gross. The Hollywood adaptation of My Cousin Rachel was shown to have a significant impact on the sales of Daphne Du Maurier thriller. The sales of the book in 2017 alone accounted for 23% of the sales since 1992. Now, the research suggests that adapted films tend to perform better because films can leverage the popularity of well-known books through an existing audience. Films adapted from books also tend to have a richer, more fully developed story to draw on. In terms of TV adaptation, it was revealed that a quarter of dramas were based on literary sources and attracted 56% of larger share of the audience than those based on original scripts. 14 of the 35 high-end series produced in the UK in the period between January and September 2017 were based on books, compared to 7 based on true stories or historical events and 5 based on pre-existing films or TV stories. Now, in the case of 2016 BBC broadcast of The Night Manager, research revealed that while the novel was in circulation for over 25 years, 82% of the copies it sold 82% of the copies it sold were in 2016 and 17. Sales of the paperback edition remained strong in 2017 even after the series went off air. In conclusion, the report states that there is a strong two-way relationship between publishing and the wider creative economy, wherein a successful adaptation often has spillover effects and gives a substantial boost to the sales of the original book. Now, on the basis of your understanding of the passage, answer the question given below. Select the option listing what the given sentence refers to. Films adapted from the book also tend to have a higher, richer, more fully developed story to draw. Statement 1. The plot and the storyline of such films are better. Statement 2. These characters are likely to be more vivid. 3. Statement 3. The production of such films is meant for rich and famous. Statement 4. The settings and costumes are adapted from the book. Statement 5. The making of such films require the author to write a sequel. तो बच्चों आओ सबसे पहले आंसर देने से पहले हम लोग ये पैसेज समझते हैं क्या है. बहुत छोटी एक समरी में इसको समराइज करते हैं. तो ये एक पैसेज लिखा गया है जो रिसर्च हुई थी पब्लिशर एसोसिएशन ने की थी कि जो भी फिल्म्स बुक्स पे बेस्ड हैं वो 44% बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू ज्यादा करती हैं यूके में सिर्फ और 53% वर्ल्ड वाइड देन ओरिजिनल स्क्रीन प्लेस. ठीक है, तो अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देके हमें समझाया गया है कि कैसे एक माय कजन रेचल जो हॉलीवुड अडेप्टेशन था ऑफ द बुक दाफने डू मॉरियर वो किसने इम्पैक्ट किया. सिर्फ उसकी 23% ऑफ द टोटल सेल सिंस 1992-2017 में हुई थी. एक इसमें एग्जांपल बीबीसी ब्रॉडकास्ट 2016 का भी दिया ऑफ द नाइट मैनेजर कि वो ओवर 25 इयर्स सर्कुलेशन में थी वो बुक, पर उसकी 82% कॉपीज सिर्फ 2016 और 17 को मिला के ही हुई. तो अब हमें आंसर देना है इसको कि फिल्म्स अडैप्टेड फ्रॉम बुक्स आल्सो टेंड टू हैव अ रिचर मोर फुली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रॉ. तो पैसेज के अकॉर्डिंगली अगर हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राइट, विच इज द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर. बिल्कुल ये है ही है, यहां पे लिखा है फिल्म्स अडैप्टेड फ्रॉम बुक्स आल्सो टेंड टू हैव अ रिचर मोर फुली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रॉ ऑन. यस, तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमें वैसे दिया हुआ है वहां पे एंड दिस इज करेक्ट मीनिंग द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन. सो वील टेक दिस स्टोरी लाइन of such films are better. फिर हम सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं विच इज द कैरेक्टर्स आर लाइकली टू बी मोर विविड. ऑब्वियसली बहुत अच्छे से समझाए जाते हैं किसी भी बुक में कैरेक्टर्स, तो वील ऑल्सो टेक दिस इन अकाउंट. सो स्टेटमेंट 2 भी हम लोग बच्चों ले लेंगे. द कैरेक्टर्स आर लाइकली to be more vivid.
विविड मीन्स क्लियर प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे से दर्शाया गया हो। थर्ड स्टेटमेंट है द प्रोडक्शन ऑफ सच फिल्म्स इज मेंट फॉर द रिच एंड फेमस। तो ये कहीं माना नहीं जाता कि सिर्फ जो ये फिल्म्स बनती हैं इट इज ओनली फॉर रिच एंड फेमस, एनीबडी कैन सी इट। ठीक है, तो वील रिजेक्ट थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट द सेटिंग्स एंड कॉस्ट्यूम आर अडेप्टेड फ्रॉम बुक। ऐसा जरूरी नहीं है, जो भी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, ही कैन अडेप्ट टू हिज ओन थिंग्स, सो वील ऑल्सो रिजेक्ट स्टेटमेंट 4। नाउ स्टेटमेंट 5, which is the making of such films require the author to write a sequel. Yes, this can be a possibility, so we'll be taking this into account. हम इसको भी ले लेंगे। The making of such films require the author to, अगर फिल्म अच्छी चलती है तो ऑथर एक सीक्वल भी लिख सकता है। सो मेरे करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या है? 1, 2 एंड 5। ऑप्शंस कौन सा होगा? ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, which is option C, 1, 2 and 5. 1, 2 and 1, 2 and I hope you understood it well. Best of luck.